किया, the structural reforms agenda is this full tenure of Prime Minister Shehbaz Sharif government. We have taken a number of decisions, and we intend to take these reforms very seriously, because Pakistan needs structural reforms in order to get rid of certain dependence on the foreign institutions. And I think we should stand up. आप चूँकि सारे corporate वर्ल्ड के लोग हैं, तो मैं कहा करता हूँ कि पाकिस्तान हैज़ लिक्विडिटी क्राइसिस. इट इज़ एसेट सॉल्वेंट कंट्री, बिकॉज जब कहते हैं ना जी वो डेट ट्रैप हो गया, पाकिस्तान पता नहीं किधर चला जाएगा, मैं कहता नथिंग विल हैपन, जस्ट डोंट वरी. You predicted Pakistan will default once, twice, and dozen times in 18 months. Pakistan did not default. We proved it. So बात ये है कि Pakistan has that capacity. Don't forget कि 2013 में क्या पाकिस्तान था? What was the the international recognition of Pakistan? A macroeconomically unstable country, a country to no matter which government, which political party will form the government, will declare default within 6 to 7 months. This was Pakistan, and 10 to 12 years it will take to get out of the quagmire Pakistan was in 2013. By 2013, what happened? We put our foot down and we put our head down and we did our hard work. We introduced the reforms. We did everything possible. मैंने भी आपको स्टॉक एक्सचेंज की एक मिसाल दी है. Where did Pakistan reach in just 3.5 years? 24th global economy. Total macroeconomic indicators were positive. 4% less than 4% CPI. Food inflation 2%. GDP growth 6%. Stock market best, in the South Asia. Your forex exchange reserves hit the highest record, which अभी तक नहीं टूटा. So that is Pakistan resilience. That's Pakistan. तो ये मुल्क में resilience है. जब जो लोग आपको घबराते हैं कि जी 130 बिलियन का फॉरेन डेट है, कैसे होगा? कुछ नहीं होगा. Pakistan has proven, tested, certified reserves of minerals, granite and all these $10,000 billion. So $130 billion liability is no challenge. The only thing is we have to streamline those assets. We have to make sure that all these assets are totally and properly, they are exploited and explored. So हमारी जो है ना जी ये एक negativity उसको हमें avoid करना चाहिए. पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह has a great potential. हमें पूरी तरह हमारा फोकस इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का फोकस है वो है कि जी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, दी बायलैटरल ट्रेड, और उसके साथ साथ हमें इसको मुल्क को आगे लेके जाना है, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. तो आपने देखा कि इस दफ़ा मुझे जो रोल दिया गया, मैंने डे 1 पे डिक्लेयर किया मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में, फ्रॉम टुडे द कन्वेंशनल डिप्लोमेसी इज ओवर. दुनिया में अब जो है ना वो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी. सो वी हैव बीन फोकसिंग all our missions abroad. Pakistan Foreign Affairs Office in Pakistan, we are focusing how to promote the foreign trade, bilateral trade. That is हमारा अब कभी एनालाइज करें इशू है क्या? We are twin deficit country. Yes, we are. क्या है? एक आपका फिजिकल डेफिसिट है रुपयों में, you can borrow rupees and you can handle it, but your external deficit, which is current account deficit, that you can't print foreign currency. So उसमें दोनों चीज़ें handleable हैं. So I remember in 2013, from the high level fiscal deficit, we brought it almost curtailed by 40%. So अभी भी जो प्रोग्राम है कि हम इसको, और उसके लिए हमें रिसोर्सेज जनरेट कर रहे हैं. अभी औरंगजेब साहब कह रहे थे कि पावर सेक्टर का रिफॉर्म, FBR रिफॉर्म्स, पाकिस्तान का पोटेंशियल रिपोर्टेडली 3-4 हज़ार बिलियन 3-4 ट्रिलियन रुपीज़ जो है वो वेस्ट हो रहे हैं. अगर इफ़ यू मोबिलाइज दोज रिसोर्सेज, योर दिस फिजिकल डेफिसिट डिसअपीयर्स. नाउ हाउ टू डील विद द करंट अकाउंट डेफिसिट? करंट अकाउंट डेफिसिट में यू आर टुडे 8% रफली ऑफ योर GDP एंड एक्सपोर्ट्स. ना कोई एमर्जिंग मार्केट आप कभी नहीं बनेंगे. मुझे कोई बता दे कि जी फलां एमर्जिंग मार्केट दुनिया में वो 12 से 15% टू GDP से कम उनकी एक्सपोर्ट्स हैं. सो इफ़ यू टेक इट टू 12%, between 48 billion to 50 billion, we are in business. We don't need any foreign, dependence on foreign institutions. So we have to work towards that direction. We have to increase our exports. उसमें IT का बहुत बड़ा potential है. उसमें हमारा जो focus होना चाहिए वो non-traditional जो items हैं, जो हमारे area जो हमने explore ही नहीं as a country कर सके. तो exports को बढ़ाना और इसको इन दोनों deficits को manage करना is the main agenda of Prime Minister Shehbaz Sharif government. And alhamdulillah, we are all as a team working to get these things done. अभी fish का जिक्र किया, your global
वो जो है आपके लॉन्ग टर्म इश्यूर के ऊपर उन्होंने एक नॉच ऊपर किया है. आई एम श्योर इंशाल्लाह इन टाइम्स टू कम it will go better. Your policy rate has gone down already from 22 to 19.5. So things are, your inflation has gone from 30s से कम आके अभी करीबन close to 12%. So your things are moving. The prolonged inflationary pressures have receded, and things are improving with the actions of the government. So hopefully, I think it should not take too long. But I remember Fitch projecting Pakistan in April last year 2023 that it will May 2023 Pakistan will default by 30th of June. So रीज़न कि उस वक्त हमारे पास 3.7 बिलियन के स्टेट बैंक में रिजर्व थे और इतनी रफली हमारी पेमेंट थी अगले मई और जून में. So they were right in number crunching, but we had beaten them by our actions. And Pakistan not only did not default, but also had very improved results, and the term deficit was brought down from the high 20s to $2.4 billion last year. तो पाकिस्तान में ये सारी जो पोटेंशियल्स हैं ये सारी की सारी हमें इसको स्ट्रीमलाइन करनी है, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को ठीक करना है. उसके लिए हमने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए एक्शंस ले रहे हैं. यू हैव सीन दैट इन ऑर्डर टू गिव a one window facilitation to the foreign direct investor particularly, and also the local investors, SIFC has been created. This is special investment facilitation center in which all divisions उनके नुमाइंदे उसमें मौजूद हैं ताकि पिलर टू पिलर डोर टू डोर लोगों को ना जाना पड़े. तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा फ्यूचर है उसमें हमें सब में फेथ होना चाहिए अल्लाह ताला के फजल करम से. एज ए सेड कि पाकिस्तान हैज़ लिक्विडिटी प्रॉब्लम. मोस्ट ऑफ यू हैव सीन इन बिजनेस लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स, बट इट इज़ asset solvent country. I keep saying this thing. It is asset solvent country. It is up to us as Pakistanis that we should try to streamline the assets which Allah has blessed this country with. So inshallah things will certainly improve. जहाँ तक चेयरमैन साहब ने कुछ लॉज में अमेंडमेंट्स का जिक्र किया है, my support will be there in the parliament, in the finance ministry. Aurangzeb साहब will fully support you. I'm sure we'll work together to make all the necessary amendments which are required in reforming these laws, because कोई चीज़ perpetual नहीं है. There is evolution process. So जो चीज़ हमने अपना 2017 में की थी, in the next 7 years they might require mazid improvements. So we should always be ready and move on. Digitization का और जो reforms की बात की chairman ने भी और finance minister ने भी, yes, this is the roadmap of our government, and particularly it should be of SECP. तो मैंने जैसे अर्ज़ किया कि मेरी तो बहुत लॉन्ग more than quarter of a century की association है with this institution, and it's late Dr. Tariq Hassan. I basically brought him in 1999 from World Bank. Usually it is unusual to send on secondment to your own country of origin. तो मुझे वुल्फ हसन उस वक्त प्रेसिडेंट थे वर्ल्ड बैंक, ही सेड कि मिनिस्टर वी अंडरस्टैंड यू वेरी वर्कहॉलिक and this, so please tell us if you can